Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease, and today we are doing the summary of foreign exchange. Okay, I've already sent you all the videos related to each and every topic. Okay, the slides are also mentioned over there. You can go through that, but in the summary we are going to just give a quick revision of all the topics. Okay, so foreign exchange is what? That is the meaning. It refers to all the currencies other than domestic currency of a country. For example, India's domestic currency is Indian rupee, so other countries' currency like dollars, pound, or dinar. Okay, so all are going to be foreign exchange. Okay, then foreign exchange rate means it refers to the rate at which one currency exchange for the other. Okay, it represents the price of one currency in terms of another currency. It can be fluctuate from year to year or even day to day exchange, day to day. Okay, so exchange is determined by the this is by, okay, not nine. This is by the forces of demand and supply. Now here, very quickly, we are going to do the this one, that is the depreciation, currency depreciation and currency appreciation. Okay, I have already made this one a detailed video on it, but in this summary portion, we are going to just give a quick recap. Okay, so depreciation of domestic currency means the increase in price of foreign currency or decrease in price of domestic currency, right? And foreign currency, that is dollar, becomes expensive. Okay, and it is caused by increase in demand or decrease in supply of foreign exchange, right? Then appreciation of domestic currency means that is the decrease in price of foreign currency or the increase in price of domestic currency. Okay, then foreign currency, that is dollar, becomes cheaper. Okay, and it is caused by decrease in demand or increase in supply of foreign exchange. Okay, so effects on imports and export, it becomes what here, that is in the depreciation, what happens? Exports increases and national income. NY means national income. National income increases and imports just falls. Okay, so imports become less or decreases. So domestic currency weakens, it buys less foreign currency in case of depreciation. Currency depreciation. In case of currency appreciation, domestic currency strengthens, it buys more foreign currency. Okay, because the value of domestic currency has increased, so because of which exports just fall down, okay, or decreases. National income also decreases and imports increases. Okay, so in this, national income increases because the production also increases, exports are doing more. Okay, we are doing more exports. Fine, so this was the, you can say, difference between currency depreciation and appreciation. Now next, start fixed exchange. One more thing here, that is types of foreign exchange rate system. There are three types of foreign exchange rate system: fixed exchange rate system, flexible, and managed floating. Okay, so fixed exchange rate system or pegged exchange rate system, the meaning is here and the merits are, that is, first of all, in fixed exchange rate system, it is also known as pegged exchange rate system. Okay, and it is the, here the currency is fixed by the government. The main thing is this, and to main objective, these are the two objectives here, and the external standard is of gold or currency, that is the dollars. Okay, so when value of domestic currency is tied to the value of another currency, जब दो currencies में होता है खाली आपका exchange, then it is known as pegging. And when the currency is fixed in terms of gold, it is called the parity value. Okay, then the merits and demerits are already given here, you can go through that. Then floating or flexible exchange rate system, when the exchange rate is fixed by the forces of demand and supply. Okay, then that is known as the floating or flexible exchange rate system. Okay, it is just the opposite of, you can say, the fixed exchange rate system. In this, no intervention of the government is done. Okay, and the exchange rate is determined by forces of demand and supply. Okay, the merits and demerits are already given here. Now we have one more point: devaluation and revaluation. Okay, now devaluation and revaluation. Devaluation refers to reduction in price of domestic currency in terms of all foreign currencies under the fixed exchange rate system. Okay, that is done by the government. Devaluation of the currency is done by the government, and depreciation is the fall in market price. अपने आप fall कर रहा है, right? In terms of foreign currency under flexible exchange rate system, that is by the demand, by the forces of demand and supply. Okay, then it takes place under fixed exchange rate system. Devaluation होगा और depreciation क्या होगा? दोनों में currency की value कम होगी, लेकिन एक क्या होगा? जो आपका devaluation है वो government करेगी, and depreciation by the forces of demand and supply. Okay, then depreciation is take place under flexible exchange rate system. Please, this is very important. Okay, the differences are very important here. Now the difference between flexible and fixed exchange rate system, you can go through that. And revaluation क्या होता है? जब गवर्नमेंट आपकी करेंसी जो है आपकी कंट्री का revaluate करे, उसको बढ़ाए. It refers to increase in the value of domestic currency. Okay, so devaluation and revaluation
जो है आप याद रखिएगा ये गवर्नमेंट करेगी, ओके। एंड आपका ये डेप्रिसिएशन है, एंड एप्रिसिएशन इज बाय द मार्केट फोर्सेस, ओके। Then managed floating system, it is a combination of both fixed and flexible. Okay. So it is, that's why it is known as hybrid or mixture of fixed and flexible exchange rate system. Okay. And here central bank keeps a large stock of foreign currency. These reserves are used to buy or sell currencies during intervention. And I have already explained very well in the previous videos also. Just go through that. और आपको बाकी जो है ये सब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया. What is dirty floating? When the central bank or the RBI of a country, okay, in which value of country's currency is allowed to change in relation to others but it's manipulated by central bank. क्योंकि जब central bank interfere करके उसको manipulate करती है, उसको ऊपर नीचे करती है, fluctuate करती है to keep within the particular range, this is known as dirty floating. Okay. Now here you have the demand for foreign exchange. इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है, डिमांड कब बढ़ेगी, दैट इज द इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे तब हम जो है डिमांड के लिए इंक्रीज करेगा. देन टूरिज्म, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स होंगे, परचेजेस ऑफ असेट्स होंगे, स्पेकुलेशन, तो इसलिए हमें फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है. दैट्स व्हाई द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेज. ओके. देन इसका डायग्राम कैसा होगा, सिंपल आप डिमांड कर्व बना देंगे एंड एज द रेट इंक्रीजेज द क्वांटिटी और डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज डिक्रीजेज. इट शोज एन इनवर्स रिलेशनशिप. ओके. ये आपको मैं सब बता चुकी हूँ, यू कैन गो थ्रू दैट. सप्लाई का सिंपल आप सप्लाई का ये मतलब याद रखिएगा, दैट इज द डायग्राम. इसके अकॉर्डिंग ही आपको करना है. सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेस फ्रॉम द रिसिप्ट्स ऑफ फॉरेन करेंसीज, पीपल हु रिसीव इट. Why for what मतलब what are the reasons why the supply of foreign exchange is required? Okay, because exports of goods and services हमें चाहिए, हम एक्सपोर्ट्स कर रहे होते हैं. देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए तो रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड होना चाहिए. देन लोन्स हमें फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ग्रांट्स एंड डोनेशंस फ्रॉम अब्रॉड मिल रहा हो. ओके. कहीं कहीं पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, प्लीज इग्नोर दैट. ओके. देन रीजंस फॉर राइज इन सप्लाई सेम यही हो जाएंगे. सप्लाई का फॉरेन एक्सचेंज सिमिलरली रेट और सप्लाई में क्या होगा, आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा. एंड वाई और एक्स एक्सिस पे आप क्या लेते हैं ये आपको मेंशन कर दिया था मैंने प्रीवियस वीडियोस में. एज द फॉरेन एक्सचेंज रेट राइजेस, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑल्सो राइजेस. ओके. नाउ डिटर्मिनेशन हियर ऑफ एक्सचेंज रेट कहाँ पे डिटर्मिन होगा, जहां पे दोनों ये डिमांड एंड सप्लाई आपके इंटरसेक्ट करेंगे, दैट इज ई पॉइंट. ओके. आप एक नॉर्मली फ्री हैंड से बनाइएगा डायग्राम. ओके. एंड देन जहां पे भी पॉइंट आपका जहां पे मैच करेगा, जहां पे दोनों लाइंस आपकी इंटरसेक्ट करेंगी डिमांड और सप्लाई कर्व, देन दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. ओके. और उसी के सामने जो रेट आएगा दैट इज द इक्विलिब्रियम रेट, और जहां पे क्वांटिटी आएगी वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. नाउ फॉर एग्जांपल इफ द रेट इंक्रीजेस, ओके, रेट आपके क्या, एक्सचेंज रेट राइजेस, देन डिमांड फॉल. देखिए डिमांड क्या हो रही है, रेट जैसे ही बढ़ा तो पहले आपकी डिमांड कितनी थी, यहाँ तक थी, राइट. तो यहाँ पे क्या हुई, वो कम हो गई. रेट आपकी डिमांड विल फॉल एंड सप्लाई विल राइज. सप्लाई आपकी इतनी बढ़ गई है, राइट. डिमांड का पहले कर्व आ रहा है तो डिमांड खाली आपकी कितनी है, इतनी बन गई है खाली. ओके. यहाँ तक होनी चाहिए थी डिमांड, लेकिन डिमांड अब क्या हो गई, खाली इतनी हो गई. जैसे रेट इंक्रीज करा और सप्लाई आपकी बढ़ गई तो जो डिमांड और सप्लाई में डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है दैट इज द एक्सेस सप्लाई. ओके. देन जैसे ही रेट कम होता है, एज द रेट फॉल्स, देन व्हाट हैपेंस हियर, डिमांड इंक्रीजेस. उसका ऑपोजिट हो जाए बिकॉज इट हैज एन इनवर्स रिलेशनशिप. एंड सप्लाई क्या हो गई आपकी, जैसे ही रेट फॉल हुआ तो इसका मतलब है सप्लाई भी आपकी कम हो जाएगी. जो बताया गया है उसी को आप खाली फॉलो करेंगे, डायग्राम ऐसे बना देंगे एंड द समरी पार्ट इज हियर. ओके. इसको आप एक्सप्लेन करने के लिए आप इसकी यूज कर सकते हैं एंड हियर ऑल्सो. ओके. देन चेंजेस इन एक्सचेंज रेट, चेंज इन डिमांड अगर होगा तो क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड होगा. एंड इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज विल शिफ्ट द डिमांड कर्व टुवर्ड्स द राइट. ये राइट में शिफ्ट करेगा तो रेट इंक्रीज कर जाएगा. ओके. डोमेस्टिक करेंसी हैज डेप्रिशिएटेड. डिक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज विल शिफ्ट द डिमांड कर्व टुवर्ड्स द लेफ्ट. इट इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डेफिशिएंट डिमांड. ओके. इट इज अ सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, एक्सेस नहीं है. ओके. दिस इज नॉट एक्सेस हियर, एक्सेस को आप कैंसिल कर दिएगा, राइट. रिजल्ट, एक्सचेंज रेट फॉल्स, डोमेस्टिक करेंसी हैज एप्रिशिएटेड. देन चेंज इन सप्लाई, अगेन इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है. व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन सप्लाई इट मींस the foreign exchange will shift the supply curve towards right and it's a situation of excess supply, results exchange rate falls. Okay. जब डायग्राम बनाओगे तब उससे ज्यादा पता चलेगा. जो डायग्राम बताया उसके नीचे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है, तो आप इससे भी इसको पूरा डायग्राम को इसको समझा सकते हैं, एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं. ओके. Then decrease in supply, similarly a decrease in supply for foreign exchange will shift the supply curve towards left. It's a situation of deficit supply. Okay. यहाँ पे ये चीज आप जरूर से इसको कैंसिल कर देना, बाय मिस्टेक ये रह गया है यहाँ पे लिखने में.
here you have should the demand curve towards एक्सेस हटा देंगे आप. ओके, एक्सेस वाला सीन नहीं है यहाँ पे, राइट. यू विल इरेज दैट. ओके, इसको एक्सेस को इग्नोर करिएगा. Then last but not the least, foreign exchange market, meaning here it is a market in which foreign currencies are bought and sold. ये read only topic है. The buyers and sellers include individual firms, foreign exchange brokers, commercial banks and central banks, and large number of foreign currencies are traded and converted and exchanged. Okay, then functions क्या है? You just go through that. Okay, kinds of foreign exchange market दो तरह की होती है. एक होता है spot market, एक होता है forward market. Spot market में उसी टाइम उसी वक्त इमीडिएटली आपका हो जाता है रिसेप्शन पेमेंट का ट्रांजैक्शन, and the rate of exchange prevails in the spot market. It is termed as a spot exchange rate. Okay, whereas forward market यानी कि उस वक्त नहीं होता बल्कि आगे के लिए फॉरवर्ड कर देते हैं. It refers to the market in which sale and purchase of foreign currency is settled on a specified future date, okay, at a rate agreed upon today. फ्यूचर डेट पे होता है सेटलमेंट, बट द रेट इज अग्रीड अपॉन टुडे. द एक्सचेंज रेट कोटेड इन फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन इज नोन एज द फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट. एंड व्हाई दिस फॉरवर्ड market is that the main reason is to minimize the risk of loss and to make profit. Okay, with this we come to the end of the summary part of foreign exchange, and in the next video we are going to start the balance of payment. Hope you like it. Please do like, share and subscribe for